Good morning, everyone, and welcome to the class. We are doing the chapter Development and Political Theory, and in the previous class, we were discussing about the alternative model of development. And in this alternative model of development, we have seen that regarding development, we must adopt the strategy of bottom up strategy in which there must be participation from the people. Then only we can think of development. And development and democracy both have same purpose, that is common good. So the developmental activities can be successful only when it is done by following the democratic principles like participation of people. That is very much important. And in this regard, we have also started to discuss that under this alternative model of development, the notion of development is also different. And this, what is this notion of development? According to, if we are following alternative model of development, then the notion of development will also be different. In this notion of development, we will not consider uh, development by counting the number of mobile phones, by counting the number of four wheelers, or like this. These are not the true indicator of development. They only show us the the economic development. And here in the alternative model of development, we are not focusing on the economic development only, but we are adopting the broader sense of the development. And under this broader sense of development, what comes at the thing is there must be improvement in the quality of life of the people. So development means improvement in the quality of life, and how this quality of life will be improved. This quality of life will be improved by the economical use of natural resources. That is one of the most important aspect of this notion of development, in which we can go for so many alternate arrangements, like instead of making the bigger dams, there should be uh, check dams. Then the biodegradable waste can be turned into compost by the participation of the people. So this is about the conservation of natural resource. That is real development, because when we go for such type of development in which there is conservation of natural resources is involved, then this development will be sustainable. Our future generation is going to be benefited by this type of development, because in that situation we are conserving the resources for our future generation. So डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखें, नंबर ऑफ कार्स, नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स, बट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कितने इकोनॉमिकली यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड in order to get or attain this kind of development, what is required, that people's participation. जब हम ये कह रहे हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ही इकोनॉमिक वे में यूज़ होना चाहिए, जिस जगह की जैसी नीड है उसके अकॉर्डिंगली उस जगह पे नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ किया जाना चाहिए, तो इट विल बी a failure if people are not involved of that particular area. Whatever developmental activities is to be started in a particular area,
The people of that area must be consulted. Their views must be taken into consideration. Their needs, their demands, their interest, everything should be given proper attention. एंड जब लोगों का पार्टिसिपेशन होगा तभी हम ये सोच सकते हैं कि इस तरह के डेवलपमेंट के मॉडल को हम अडॉप्ट कर सकते हैं जिसमें कि हमारा focus will not be our focus will not be on the economic development only, but the focus will be on the on improving the quality of life. And in this process, the most important role is played by the local government, because local government is the government of the people. That is real democracy. क्योंकि ये लोकल लेवल पे होती है और गवर्नमेंट को सही में जो आम जनता होती है वही रूल कर रही होती है एट द लोकल लेवल. तो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि जो लोकल गवर्नमेंट है वो उनको इन्वॉल्व होना पड़ेगा एंड दे विल इन्वॉल्व द पीपल in the process of development. So we have discussed all these things. Such activities have to take place at a local level and therefore demand higher involvement from people. Activities like compost making, then check dams, microhydel projects, then rainwater harvesting, solar and biogas plant. All these activities need people's participation. Big projects not the only way to effect big improvement. If we want to bring big improvement, it does not mean that in order to bring big improvement there is need of big projects. Even with the smaller projects we can bring big improvement. Opponent of big dams have advocated a series of small dams and bunds which require much less investment, cause minimal displacement, and can be beneficial to the local population. So there are many people, especially the environmentalists and the people who are very much concerned with the problems of the displaced people. These people have give their view that instead of going for big dams, what is required that small dams and bunds should be made. अगर हम बहुत जो मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं डैम्स को हम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट या मेगा प्रोजेक्ट कहते हैं उसको नहीं ना उसकी तरफ न जा कर के हम स्मॉलर डैम्स बनाएं और बंस बनाएं तो उससे भी हमें वही ऑलमोस्ट वही बेनिफिट्स मिलेंगे जो कि बड़े डैम से मिल रही है बट इससे लॉस काफ़ी कम हो जाएगा लाइक जो डिस्प्लेसमेंट होता है लोगों का वो डिस्प्लेसमेंट बहुत कम होगा इसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम चाहिए मनी जो रिक्वायर्ड होती है दैट इज़ ऑल्सो वेरी लिटिल मनी if we compare it with the amount of money which is required for the completion of big projects, mega projects, multi-purpose projects. तो वहाँ पर उतना पैसा लगा के हम problems create कर रहे हैं. तो instead of going for these mega dams, we should go for small dams and bunds. Then there will be less investment. It will cause minimal displacement. बहुत ही कम displacement होगा इसमें और it will be beneficial for the local population. Now, at another level, there is also a need to scale down our need for non-renewable resources by changing lifestyle. So now we see these are the new aspects of development, or we can say new dimensions of development. What are the new dimensions of development? The first point in this, we can say that to conserve natural resources.
So many things can be done in order to conserve natural resources like rainwater harvesting, compost pits का बनाया जाना, then solar and biogas gas plant, micro hydro projects. Uh, all these can be done to conserve the natural resources. And then we come to the next point: what else can be done? Um, mm, for can be done under this alternative model of development, which is the other another dimension of development, and that is scale down our needs for non-renewable resources. Okay, so the another thing which can be said to be the dimension of development under this alternative model of development is that we should scale down our needs for non-renewable resources. जो भी resources हमारे non-renewable है, which cannot be renewed, उस तरह के जो resources हैं उन पर हमारी जो उनकी जो हमारी need है उसको जितना हो सके उतना हमें कम करना चाहिए. We should use more and more those resources which are renewable, so that जो natural resources है वो हमारा बच जाए आगे के लिए, हमारे future generation के लिए. So this is a tricky issue because it may appear as if people are being asked to accept a lower standard of living, and this could also be seen as a curtailment of their freedom of choice. So when we are saying ki scale down our needs for non-renewable resources, so what does it mean? Ki we should use lesser electricity, and in today's world we find that what is the meaning of advancement? What is the meaning of enhanced lifestyle? Use of more and more numbers of gadgets, electronic gadgets. जो भी जिस किसी भी फैमिली को हम कहेंगे कि बहुत एडवांस्ड फैमिली है, दैट फैमिली इज यूजिंग मोर एंड मोर electronic equipments, electronic gadgets, and because of that they need more and more electricity. क्योंकि हम जानते हैं कि जो जितनी ज़्यादा मतलब रिच फैमिली होती है वो उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती है. तो इलेक्ट्रिसिटी और हमारी लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ आर दे बोथ आर connected with each other. So in this case, in this situation, if we are asking people to scale down their needs for non-renewable resources, then we are asking them to lower down their standard of living, and we are also limiting their freedom to choose, because in a democracy people have freedom. People are free to choose whatever they want because it's a democracy, or whatever they want for themselves, that is inviolable area, है ना, जैसा कि मिल ने कहा था. तो ये जो इनवायलेबल एरिया है जिसमें कि हम अपने हिसाब से चीज़ों को चूज कर सकते हैं, वहाँ पर हमें रोका जा रहा है कि हम अपने उन रिसोर्सेज को कम से कम यूज करें जो कि हमारे नॉन रिन्यूएबल है. ओके, तो ये एक तरह से प्रॉब्लम, इट विल क्रिएट प्रॉब्लम, क्योंकि ये हमारी फ्रीडम को कर्टेल कर रहा है, ये हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को नीचे कर रहा है. But debating the possibility of alternative lifestyle could also mean increasing avenues for freedom and creativity by opening up alternative vision of the good life. So it's not कि by curtailment, this is
if we are not using more and more non-renewable sources, it means कि we are going down. It's not like that. Okay, there is possibility of alternative lifestyle. We will have to change our lifestyle. जो भी हम लाइफस्टाइल अभी हमारा है, जिसमें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, और यही हमारे रिचनेस का जिसको कहेंगे स्केल होता है। इसी के बेसिस पे हम ये देखते हैं कि कौन फैमिली कितनी रिच है। तो ये लाइफस्टाइल का जो मॉडल है उसको हमें चेंज करने की ज़रूरत है। और जब हम अपनी लाइफस्टाइल की जो लाइफस्टाइल की टुवर्ड्स हमारी जो सोच है, अगर हम उसको चेंज कर देंगे तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी कि इससे हमारा फ्रीडम लिमिट हो रहा है या इससे हमारा लाइफस्टाइल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो हो रहा है। तो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड कि हम अपने लाइफस्टाइल के लिए जो सोचते हैं उस सोच में हमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है। However, any such policy would call for a high degree of cooperation between government and the people across country. So, if we want कि जो lifestyle के बारे में हमारी व्यू है उसको हम चेंज करना चाह रहे हैं, तो ये इसके लिए क्या what is required that there must be cooperation between the government and the people across the country. जब पीपल और गवर्नमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा, कोऑपरेशन होगा, देन ओनली these things can be done practically. This would mean adopting democratic method of decision making on such matters. So how this cooperation can be achieved? Cooperation between the government and the people across the country. How this cooperation can be achieved? By uh, making sure the participation of the people in the decision making process. जब हम लोगों को ही डिसीजन लेने के लिए एम्पावर कर देंगे, पीपल विल टेक पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, तो क्या होगा कि देयर विल बी हार्मनी, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट, और लोग जैसे चाहेंगे उसी हिसाब से डिसीजन होगा। अगर लोग ये चाहते हैं कि हाँ हमें एक अल्टरनेटिव लाइफस्टाइल के बारे में सोचना होगा, क्योंकि आज जो जिस जगह पे हम पहुंच गए हैं डेवलपमेंट के जो ट्रेडिशनल मॉडल था उसको अडॉप्ट करते हुए आज जहाँ पे हम पहुंच चुके हैं, अब यहाँ से हमें आगे हम नहीं जा सकते, अब हमें दूसरा रास्ता हमें अडॉप्ट करना होगा, दैट इज अल्टरनेटिव मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट हमने अडॉप्ट किया हुआ है उसको छोड़ना होगा और हमें एक न्यू मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की तरफ जाना होगा। एंड दिस अगर ये सपोज दिस टाइप ऑफ जो न्यू मॉडल ऑफ डेवलपमेंट या अल्टरनेटिव मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की बात हो रही है, सपोज दैट अल्टरनेटिव मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इसको लोगों पे इम्पोज करती है कि आपको ऐसे ही करना है, अदरवाइज आपको पनिशमेंट लगेगी, अगर आप नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे तो आपको पनिशमेंट लगेगी। तो इसमें क्या होगा कि लोगों का जो सपोर्ट मिलेगा गवर्नमेंट को वो धीरे 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 बिल्कुल खत्म होने लगेगा। दो इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, स्टिल हम क्या देखेंगे कि लोगों का सपोर्ट कम होने लगेगा, क्योंकि व्हेन दे फील कि उन पर डिसीजन ऊपर से इम्पोज किया गया है, दे डोंट सपोर्ट। दिस इज ह्यूमन नेचर। जैसे हम अपने अगर अपने शहर में देखें तो पॉलीथीन्स के यूज़ पे कई बार रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं। जब नया नया कुछ भी चीज़ कोई भी लॉ बनता है तो उसको थोड़े दिन फॉलो किया जाता है, बट आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ्स एवरीवन फॉरगेट्स अबाउट इट। क्यों हम इसको भूल जाते हैं? अगर पॉलीथीन रोकने के लिए गवर्नमेंट हमें कह रही है, अगर गवर्नमेंट उसके लिए हमें पनिशमेंट भी हमें देना पड़ रहा है, पेनल्टी देनी पड़ रही है, तो दैट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द होल ह्यूमैनिटी। We must cooperate with the government, but we are not cooperating with the government. Why? Because we feel that this decision is not taken by the people. लोगों के व्यूज को भी गवर्नमेंट को लेना होगा। अगर
लोगों को इन्वॉल्व करके, अगर पीपल्स पार्टिसिपेशन को एंश्योर करके ये डिसीजन लिया जाएगा, तो लोगों का सपोर्ट मिलेगा और तब वो डिसीजन सक्सेसफुल होगा। क्योंकि एक्चुअली laws are not there, laws are not having such power that they can change the society. सोसाइटी कभी भी लॉ से नहीं बदलती है। यस, लॉ कैन बी अ टूल, एक टूल की तरह लॉ हो सकता है जिसमें कि लॉ हमें असिस्ट करता है चेंज करने में, बट लॉ कैन नेवर बी द ओनली फैक्टर टू चेंज द सोसाइटी। ये जो सोसाइटी चेंज होती है वो तभी चेंज होगी जब हम उसके लिए हमारा जो मेंटल सेटअप है वो उसके लिए प्रिपेयर होगा। जब तक लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा, जब तक हम नहीं चाहेंगे, तब तक चीज़ें नहीं बदलेंगी। अगर हम यहाँ पर डेवलपमेंट के मैटर को ही देख रहे हैं, अगर इसमें किसी भी सोशल इशू को हम उठा के देखें, तो व्हाट वी फाइंड कि बहुत सारे लॉस बने हुए हैं जो कि सोशल इल्स को रोकने वाले हैं, सोशल एविल्स को रोकने वाले हैं, बट स्टिल वो एविल आज भी हमारे सामने, आंखों के सामने सब होता है। क्यों? क्योंकि लॉ जो बन गया ऊपर से आया है। बॉटम, इट्स अ टॉप डाउन अप्रोच, ऊपर से लॉ बना करके लोगों पर इम्पोज कर दिया गया। People are knowing that this law is in the interest of the whole humanity, still they are not following the law, क्योंकि वो उनका पार्टिसिपेशन नहीं है। अगर इसी लॉ मेकिंग प्रोसेस में लोगों को डायरेक्टली पार्टिसिपेट करने का एक तरीका अपनाया जाता, तो उस तरह के सिचुएशन में वो लॉ को पब्लिक सपोर्ट मिलता है, और इसी को हम कहते हैं कि कोऑपरेशन है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। So, but if we understand development as a process of enhancing one's freedom and think of people not as passive consumer but as active participants in deciding development goals, it should be possible to reach agreement on such issues. So it should not be considered that this process of development is such in which the people are passive consumer. बस वो है वहाँ पर, people are there to follow the laws of the government, to follow the decisions of the government. They are not the passive consumer, but they are active participants. They are actively participating in the decision making process of the government. Okay, and this development is a process through which um, freedom of people are enhanced. डेवलपमेंट एक ऐसा काम, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें कि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ लाने के लिए हम लोगों की फ्रीडम को कर्टेल करें, बट it should be it should enhance the freedom of the people. And now we are yes, it should be possible to reach agreement on such issues. In the process, our notion of rights, freedom and justice would be extended. तो जब हम डेवलपमेंट के डिसीजन में लोगों का इन्वॉल्व करेंगे, पीपल्स पार्टिसिपेशन होगा, तो उस तरह के पार्टिसिपेशन से क्या होगा? फ्रीडम आएगी सोसाइटी में, पीपल विल बी एबल टू बी फ्री, बिकॉज उनको ये समझ में आएगा कि जो डिसीजन आया है, द डिसीजन इज देयर ओन डिसीजन एंड देन दे विल फॉलो द डिसीजन। तो इट विल ब्रिंग freedom, justice and social justice and freedom in the society. So it is very much important कि लोगों का participation होना चाहिए, तभी वो developmental activities जो है वो हमारे लिए beneficial होंगे. And now we are in the concluding part of the chapter. The idea of development refers to the desire for a better life. Development never means इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओनली, कि हमारी इनकम बढ़ गई बस हो गया डेवलपमेंट, हमने बहुत सारी चीज़ें परचेज कर ली, हो गया डेवलपमेंट। नो, डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हम एक बेटर लाइफ लीड कर पाए,
हर कोई चाहता है कि हम जिस किसी भी कंडीशन में हैं उस कंडीशन से हम ऊपर जाएं, जहाँ भी हैं उससे हम बेटर पोजीशन में जाएं. तो दैट इज द डिजायर फॉर बेटर लाइफ. डेवलपमेंट इज द डिजायर फॉर better life. This is a very powerful desire, and the hope of improvement is a driving force of human action. Everyone desires this. हर कोई चाहता है कि हम आगे बढ़ें. कोई भी स्टैग्नेंसी नहीं चाहता है अपनी लाइफ में कि हम जहाँ हैं वहीं रहें, बस इतना हो गया अब ठीक है. नहीं, हमें आगे बढ़ना है. और जो खराब कंडीशन में है उन तो वो तो हमेशा चाहेंगे आगे बढ़ना. जो अच्छे कंडीशन में है वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं. तो ये एक नेचुरल टेंडेंसी है. और ये जो होप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, यही तो ड्राइविंग फोर्स होता है. जो कुछ भी हम काम करते हैं, वॉट एवर वी डू, उसके पीछे यही हमारा फैक्टर काम करता है कि हम इम्प्रूवमेंट चाहते हैं अपनी कंडीशन में. In this chapter, we have seen how widely accepted versions of what constitute improvement have come under critical scrutiny. जो चीज़ें वाइडली एक्सेप्टेड हैं, जैसे कि किसी भी कंट्री का जीडीपी देखा जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, कि मतलब उस कंट्री में डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं, उसकी जीडीपी देखी जाती है, उसका एवरेज इनकम देखा जाता है, पर कैपिटा इनकम देखा जाता है. बट और इसी बेसिस पे, यही जीडीपी और ये सब कुछ के बेसिस पे हमने पूरी दुनिया को डेवलप्ड और डेवलपिंग में डिवाइड भी किया है. बट ये जो चीज़ें हैं कि जब डेवलपमेंट को सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ जोड़ा जाता है, तो ये बिल्कुल भी गलत नोशन ऑफ डेवलपमेंट है. दिस इज अ कम्प्लीटली रॉन्ग नोशन ऑफ डेवलपमेंट. There is a multi-pronged search for a more equitable, sustainable, and democratic model of development. We want development, a new model of development which should be sustainable. Sustainable means which should make provision for the needs of the future generation also. Democratic model of development means the model of development should be based on the participation of the people. And equitable model of development means in which benefit and burden of the development process should be distributed equally. ये नहीं कि कोई एक ग्रुप है जो मोस्टली वो बेनिफिट में ही रहता है और कोई एक ग्रुप है जिसको सिर्फ और सिर्फ बर्डन उठाना पड़ रहा है. दिस शुड नॉट बी देयर. ये होता है equitable model of development. Okay. In the process, a number of concepts of political theory such as equality, democracy, and rights have been reinterpreted. We have reinterpreted the concept of equality, democracy, and rights in context of development. उसको हमने development के साथ जोड़ के देखा, उस पर डिस्कस किया, और हम इसी कंक्लूजन पे हम आते हैं कि जो भी डेवलपमेंट का मॉडल हम अडॉप्ट करें वो ऐसी होनी चाहिए जिसके साथ साथ डेमोक्रेटिक प्रोसेस भी चले, जिसके साथ साथ इक्वालिटी और फ्रीडम और राइट्स का कॉन्सेप्ट है वो भी, उसकी भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरे होते जाएं. The issues that have arisen while pursuing the goal of development reveal that the choices we make have an impact upon others, other human beings, and other species in the world. So, when we are discussing this development, we see that जब हम डेवलपमेंट के गोल को परसू करते हैं तो जो भी चॉइस हम बनाते हम चूज करते हैं, वॉट एवर वी चूज, उसका इम्पैक्ट जो होता है वो दूसरे जो हमारे फेलो ह्यूमन बींग्स हैं उन पे भी पड़ता है और जो अदर स्पीसीज हैं उन पे भी पड़ता है. So we must therefore see ourselves as a part of the larger universe, for our fates are linked together. So we should not think as an isolated person. We are not isolated people. We all are human beings. We all are connected to each other. Whatever decisions we take, whatever choices we make, that is certainly going to affect the other human being. That is certainly going to affect the other species. अभी नहीं करेंगे, थोड़े दिनों बाद करेंगे, बट दे विल बी अफेक्टेड. हम ऐसे कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए हमें जिससे कि हमारे जो फेलो ह्यूमन बीइंग है
उनके लिए जो हार्मफुल हो, बिकॉज वी ऑल आर लिंक टुगेदर। अगर एक के लिए वो हार्मफुल होगा तो अल्टीमेटली वो पूरे ह्यूमैनिटी के लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। So besides my actions not only besides my action not only affect others, they also have an impact upon my own future possibility। ये नहीं कि सिर्फ हम दूसरे के पे ही असर होगा, जो भी चॉइसेस हम चूज कर रहे हैं उससे हमारा खुद का भी जो आगे आने वाला जनरेशन है दैट विल आल्सो बी अफेक्टेड। what we discussed about the depletion of natural resources, तो जो भी कुछ हम कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट हम पे पड़ेगा, हम पे नहीं पड़े हमारी फ्यूचर जनरेशन पे पड़ेगा। So we need therefore to choose carefully, keeping in mind not just our present needs but also long-term interests. So this is all about our chapter development, and now we will meet in the next class.